we very soon lives will just wither away the way animals are withering away. Humans will start withering away. So I think it's a great initiative. Yes. So it's a great initiative and heartiest congratulations and all the best. And here's to many, many more. Thank you, Akansha ji. Thank you for being here. Here's your sapling. Sarah will help you. Now we'll have National College for the audience. That was such an amazing act. Wow. National College के जोरदार तालियां. Big round of applause for the entire student of National College for giving amazing. All the students you also on the student take a photo. और जब तक इन्होंने white t-shirts पहने थे ना तो अच्छा लग रहा था. But the moment ये वो तो कुर्ता आता था तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था. I would want all of you all to bow down to the public one more time and thank you so much for starting the event with such a nice performance. एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए National College के students के लिए. What an energy, and we have a lot of guests coming up. Deepti from 360, want to please come in? From 360 team, Deepti. So as you see, जैसे हमने we started with an energetic power. मिराज काफी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं. We have a lot of stars, a lot of guests over here, and of course a lot of our lovely audience. लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी लोग हैं जिन्हें अभी स्टेज पर हमें बुलाना ही चाहिए. So let's start with the felicitation for the first round. सबसे पहले मैं अपनी टीम को बोलना चाहूँगी that we are going to begin with the felicitation. So come forward. So जैसे मैंने बताया, not only colleges, not only institute, not only organization, but everyone is part of this environment day. Every successful woman is she herself. Once she decides what she wants to do. Paras has been always a part of. I request Mr. Asif Bamla and sir also. Samir Kadam ji. Mr. Paras. Samir Kadam ji, please मंच पर आएं आप. दादा please मंच पर आइए ना. समीर कदम जी आप please मंच पर ऊपर आए. साथ साथ हमारे बीच एचएमए ग्रुप के डायरेक्टर दानिश भाई हैं. दानिश खान जी बहुत बहुत स्वागत आपका. ऑल द वे फ्रॉम उत्तर प्रदेश आप यहाँ पर आए और हमेशा से आप एनवायरनमेंट को लेकर सपोर्ट करते हैं. Paras, your thoughts on environment overall?
थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है बामला फाउंडेशन और हमारे बीएमसी की तरफ से, जो भूमि नमस्कार है, और यही सही वक्त है हमें सबको एक होके इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशन की बात है। अगर हम अभी से शुरुआत करेंगे तो आगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा। सो लेट्स प्लांट मोर ट्रीज दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एंड उसके आगे भी, एंड लेट्स कंट्रीब्यूट आवर थिंग टू भूमि नमस्कार। क्या बात है पारस, थैंक यू सो मच फॉर दोज काइंड वर्ड्स एंड यू नो एवरीथिंग दैट यू डू। वेरी फेमस डायरेक्टर श्रीकांत, तुषार हीरानंदानी, जोरदार तालियां। तुषार का काम आपने हमेशा कैमरा के पीछे देखा है, ऐसी कई सारी मूवीज जो तुषार जी खुद बताएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज पार्ट ऑफ द बामला फाउंडेशन, ही इज पार्ट ऑफ भूमि नमस्कार, जो हमने कैंपेन क्रिएट किया है। द तुषार हैज बीन विद अस ओवर द ईयर्स। जोरदार तालियां फॉर तुषार हीरानंदानी जी। आफाक मोहम्मद जी प्लीज़ मंच पर आ जाएं। आप समीर दादा आपको याद करें प्लीज़। मैं चाहूँगा कि एक सैपलिंग पारस कलावत को आसिफ बामला जी, समीर कदम दादा अपने हाथों से देंगे। आसिफ बामला जी। Can we hear a huge round of applause from all of our audience members present over here? All the people who are being felicitated on the stage are our warriors. आसिफ भाई, can we present हमारे साथ खड़े होते हैं। this sapling to Paras? आइए समीर दादा, please come, समीर दादा, Arun, Inder and Afaq to give away this small sapling to Paras Kalawat. थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि आसिफ बामला जी, पारस जी, तो ये बातें जब हम सुनते हैं तो A huge round of applause from all of our audience members present over here. All the people who are being felicitated on the stage are our warriors. आसिफ भाई, can we present हमारे साथ खड़े होते हैं। this sapling to Paras? आइए समीर दादा, please come, समीर दादा, Arun, Inder and Afaq to give away this small sapling to Paras Kalawat. थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि आसिफ बामला जी, पारस जी, तो ये बातें जब हम सुनते हैं तो राइट, आई बीन जस्ट सेइंग ऑल दिस कि द क्लाइमेट चेंज इज फॉर रियल, पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। यस, इन मुंबई वी आर स्टिल सेफ, वी हैव टू डू फ्यू लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू मेक आवर सराउंडिंग मोर sustainable, which can give really good weather and environment. This is all we are here together. We have very really beautiful. amazing when you say that we are safe in Mumbai. सोचिए आपको इतनी गर्मी हो रही है, उसके बावजूद भी मुंबई का टेम्परेचर बाकी हर जगह से बेटर है. If you compare it to Delhi, if you compare it to even Nagpur for that matter, तो यहाँ पर अगर ये टेम्परेचर बेटर है तो सोचिए वर्स्ट कितना वर्स्ट होगा. Absolutely, Madhya. And when जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया तो there was lot of तालियां मलाइका अरोड़ा खान जी के लिए, मलाइका अरोड़ा जी के लिए, because she was the one who actually participated in this whole video campaign of भूमि नमस्कार. And मैं चाहूँगा again आज जैसे हमने देखा कि it was always contributed by our supporters and contributors. We have the team 361 Health. If they are there, I request them to please come on stage. Team 361 Wealth. So 361 with IFL have been always big supporter of Seher Bamla. I request you to please come on stage.
to present this lovely award. Asif Bamla ji, अब मैं चाहूंगा कि please आप मंच पर आए, सहर बामला जी. Along with that, we have some really important person over here. We have Mr. Kiku Sharda. Kiku Sharda ji, please मंच पर आए. Kiku Sharda ji, the Kapil Sharma show of fame. Kiku Sharda ji, कोई नाम के मोहताज नहीं है. Kiku ji, please come on stage. And present this wonderful trophy to Deepti. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनको जो हर शाम हमें जोरदार हंसाते हैं. मिस्टर कीकू शारदा इज हियर विद अस. आई लव द एंथुसियाज्म गाइस. And this is a felicitation for 361 And for Kiku ji, Miss without Deepti. आपकी वो सारी बातें कि वहाँ पर कपिल thank you Deepti ji. Your thoughts on environment, your thought on actually what climate change is. No, but it's a great initiative and it's extremely important. बहुत ज़रूरी है कि हम environment के लिए कुछ करें. तो मतलब मेरा बस मानना है कि the least we can do is take care of the environment because this is where we live. ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पर हैं और हम सुरक्षित हैं क्योंकि environment है. अगर हम गलत करेंगे हमारे साथ गलत होगा, ये तो खैर जाहिर सी बात है. But anyways, thank you for having me here and Asif ji and the foundation, the Bamla Foundation is doing a great job and I'm extremely grateful to them for taking up something like this. They've been doing it for years and yeah, so thank you so much for having me over here. Thank you, कीकू Guruji. जी, जाने से पहले आपको एक ऐसी आपकी कोई हैबिट बतानी है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की कोई हैबिट जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, जो सस्टेनेबल है नेचर में. हैबिट जो अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट्स है नहीं मुझ में, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलता है मेरी ज़िंदगी में. बट क्या कहूँ, आई गेस दी ओनली थिंग, आई डोंट नो अगर आपने इंस्टाग्राम में वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो घर पे बहुत प्लांट्स हैं मेरे जिनसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ. And you know, I make it a point that not every day, but there are certain days जब I water the plants and even I talk to the plants. बड़ा मज़ा आता है, आप भी ट्राई करके देखिए. अगर आप अपने प्लांट से बातें करें, जवाब तो वो नहीं दे पाते हैं लेकिन बातें करके बड़ा अच्छा लगता है. So yeah, that's probably the only thing, one of the only things that I do. Yeah, thank you. आपको तो ज़रूर जवाब देते होंगे. Thank you Kiku ji, thank you for all and I will going to see you. कपिल शर्मा शो तो हम देखते हैं, बट आपने जिस तरह से लोगों को हंसाया और एक थेरेपी दी है, which has always been great. And we seeing a lot of other faces. गौर गोपाल दास जी, बहुत धन्यवाद आपका आने का, आपका आशीर्वाद इस भूमि नमस्कार पे रहा है. मैं आपको बस थोड़ी देर बुलाऊंगा. हमारे बीच हमारे आमदार आशीष शेलार जी बस कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले पे हैं और कुणाल सरमरकर जी इज हियर फ्रॉम दी शिवसेना. हमारे यहाँ के विभाग द चीफ आई बीन सी कुणाल सरमरकर जी. कुणाल सरमरकर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ऑल द लव सपोर्ट यू गिवन टू द फाउंडेशन. आपको देख रहा हूँ पाली हिल रेसिडेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, आप प्लीज मंच पर आए ऊपर. मधु पोपले जी, request Asif Bamla ji to present a small sapling to Kunal Sarmalkar ji. And while that is happening, ladies and gentlemen, you all can put your hands together. जोरदार तालियां हो जाए. जैसे कि मैं कहती हूँ कि these felicitations are for people जो हर कदम पे हमारा साथ देते हैं for an initiative which is so humongous in nature. मधु पोपला जी, आसिफ भाई आपके साथ ही ये वर्ड करेंगे. Is going to come on stage, ladies and gentlemen. कैसे जान भाई, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू जान भाई. मुझे आपको पता होगा कि जान
is doing multiple series, web series and films, and so good to see him here. आपने देखा होगा जान भाई को वो सारे सोनी के एपिसोड्स में जिनको ऑब्वियसली आज घर घर में ये पहुंच चुके हैं. और जान भाई विद द फाउंडेशन आई थिंक आज 2 साल हो गए और हमारे हर कॉज में हमारे साथ आते हैं. पर आपको पता है गर्मी लग रही है, आपको क्लाइमेट चेंज हो रही है, आपके थॉट्स और वैसी कौन सी चीज़ें आप करते हैं जिससे कि आपको लगता है कि आपके कंट्रीब्यूशन से पर्यावरण में डेफिनेटली फ़र्क आएगा? Good evening, everyone. First of all, thank you so much, my dimple guy, Raj bhai, for having me here. I want to thank Asif bhai for this initiative. You know, this is मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है. आप environment को इतना safe रखते हैं, लोगों को आप बार बार बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. It's all against the plastic and all. So guys, please, हम जितनी अपनी धरती माँ को क्लीन रखेंगे उतने खुद को क्लीन रख पाएंगे. सो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ें कंटिन्यू रखें और हमारे देश को स्वच्छ भारत बनाएं. ऑलरेडी है और अच्छा बनाएं और हम तरक्कियों की ऊंचाई ऑलरेडी छू रहे हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी कि नरेंद्र मोदी इज बैक विद अ बैंग. सो लेट्स जस्ट गिव इट अप फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गाइस, प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू जान भाई. प्लीज़ यहाँ पर रुके. मैं चाहूँगा आरिफ भाई हमारे जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से आए, स्पेशली यूएन के हमारे इस थीम के जो ग्लोबल होस्ट है, वो प्लीज़ मंच पर आए और एक छोटा सा सैपलिंग जान खान को अपने हाथों से दे. प्लीज़ आइए. और दानिश भाई आप भी प्लीज़ मंच पे ऊपर आएँ. From HMA Group, one of the directors of HMA Group, to please come on stage and present this small sapling to our dearest Zan Khan. Ladies and gentlemen, once again, a huge round of applause for all of our delegates and artists who are there on stage, जो हर बार हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी मदद करते हैं in an initiative that is for you all and for us and for the environment. And thank you Zan bhai for all the love, support and keep supporting it. थैंक यू सो मच आसिफ सर, मिराज भाई, फॉर ऑल द लव. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खूब तरक्की दे ऊपर वाला आप लोगों को और हम सबको ऐसे अच्छा रखे. आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन आपने ये नहीं बताई कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की ऐसी कौन सी हैबिट है जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है. मैं आई डोंट यूज प्लास्टिक. सो बेसिकली द बेस्ट पार्ट, आई डोंट यूज प्लास्टिक. एंड लेट्स जस्ट गिव इट अप फॉर आवर रॉकस्टार सहर. क्या बात है, जोरदार तालियां for सहर. Seher, please, thank you so much. Thank you so much. Single-use plastic actually is really bad for our hair, for our mother nature. All the lovely faces have been joining this campaign. So yes, Madhya, we have spoken about environment, we've spoken about single-use plastic. Now let's talk about Bhumi Namaskar. We restored this. How do we simplify this message of generation restoration to the masses of India? And we came up with the theme Bhumi Namaskar. जब हम कहते हैं कि भूमि नमस्कार, हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हम अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, बट जिसकी हमें असल में प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, जिसकी हमें इबादत करना चाहिए, वो हमारी भूमि है, वो हमारी ज़मीन है. और इस कैंपेन को क्रिएट करने में जब हमारी थॉट्स हमारे ग्रेट आर बाल्की सर के साथ हमने शेयर किया, तो हमने इस वर्ड को जनरेट किया भूमि नमस्कार, जो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इस तरह से वो मैसेज फैलाएगा कि हम अपने पर्यावरण को लेकर के कितने सतर्क रहें. और हमारे बीच हमारे इस भूमि नमस्कार के कैंपेन को चार चांद लगाने के लिए बामला फाउंडेशन के परिवार, एक्चुअली हमारे यहाँ के आमदार एडवोकेट आशीष शेलार जी यहाँ पर मौजूद चुके. जोरदार तालियां आशीष शेलार जी के लिए. We also have director R. Balki in the house. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to both of them. Malaika Arora and Ashish Shelarji greeting each other. Mr. R. Balki, the man behind Bhumi Namaskar. And absolutely, this was completely impossible without Godrej, the team of Godrej, Godrej Property, Godrej Industries and Godrej Lafair, who's been contributing to this great campaign of Bhumi Namaskar. Michelle, if I could just
see you around. Hi, Michelle. Yeah. So we have the big round of applause for entire Godrej team for supporting this cause and putting all their efforts to create this environment initiative of Bhumi Namaskar and also going into sustainable way. आशीष शेलार जी हमारे पास मौजूद हैं और साथ ही साथ में आर बाल्की जी हैं, आसिफ बामला जी इनको रिसीव करते हुए, नेहा जगत्यानी मैम इज़ ऑल्सो हियर, गौर गोपाल जी। हम कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। श्री एकनाथ शिंदे जी, बिकॉज ही इज बीन डूइंग फैंटास्टिक जॉब। उन्हीं की टीम के हमारे विभाग के प्रमुख कुणाल सरमाकर जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच पर आए। जोरदार तालियां फॉर कुणाल सरमाकर जी। आसिफ बामला जी प्लीज मंच पर आए आप भी। We have Saurav Chaturvedi from Runwal Group. We welcome you. थैंक यू सो मच आसिफ सर, विराज भाई फॉर ऑल द लव। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खूब तरक्की दे ऊपर वाला आप लोगों को और हम सबको ऐसे अच्छा रखे। आपने बहुत सारी बातें बताई लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की ऐसी कौन सी हैबिट है जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। मैं आई डोंट यूज प्लास्टिक, सो बेसिकली द बेस्ट पार्ट आई डोंट यूज प्लास्टिक एंड लेट्स जस्ट गिव इट अप फॉर आवर रॉकस्टार शहर। क्या बात है, जोरदार शहर से प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Single-use plastic actually is really bad for our hair, for our mother nature. All the lovely faces have been joining this campaign. So yes, Madhya, we have spoken about environment, we've spoken about single-use plastic. Now let's talk about Bhumi Namaskar. So जैसे आप जानते हैं कि बामला फाउंडेशन हर साल जब ये थीम which comes from the UN when we celebrate World Environment Day every year, like last year we had beat plastic pollution. This year we spoke about generation restoration. Now when we talk about generation restoration, we mean what are we actually holding up to the generation, what is given us in our past and what are we going to give to the coming generation. हमारे पूर्वज उसको कंजर्व करके रहेंगे, उसी में बहुत बड़ा योगदान along with the Bamla Foundation, the entire Godrej community, the Godrej industry, Godrej Lafayette, along with the Runwal Group, HMA Group जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है. So all these stakeholders, the like-minded people, they come, they talk about it. और फिर जब हमने इनसे तय किया कि इस बार हम जनरेशन रेस्टोरेशन को सिंप्लीफाई करें अपने देसी लैंग्वेज में, so we came up with a theme भूमि नमस्कार. जब हम बात करते हैं जनरेशन रेस्टोरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया था कि आने वाले 5 सालों में सबसे ज्यादा जॉब्स एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में होने वाले हैं. तो हम चाहें या हम ना चाहें पर हमें जनरेशन रेस्टोरेशन यानी कि जो कुछ भी हमने लूज किया है उसको रिस्टोर करने वाली जनरेशन हमको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, एवरीबॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स दैट जनरेशन. सो दिस इज नो मोर restoration. So we just not talk about numbers and talk about restoring, but how do we restore this? How do we simplify this message of generation restoration to the masses of India? And we came up with a theme भूमि नमस्कार. जब हम कहते हैं कि भूमि नमस्कार, हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हम अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, बट जिसकी हमें असल में प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, जिसकी हमें इबादत करना चाहिए, वो हमारी भूमि है, वो हमारी. और इस कैंपेन को आगे ले जाने के लिए हम कुछ एक्ट्स आपके बीच में लाएंगे. Was about single-use plastic, was about beat plastic pollution, and let me tell you, from 2023 to 2024, the Bamla Foundation, along with the United Nations Environment Programme, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and the Government of Maharashtra Environment and Forest Control, with the Maharashtra Pollution Control Board, has achieved to discard single-use plastic of 300 tons in just 1 year. This campaign has reached to millions of people, and people have actually discarded using this using single-use plastic. And we came up with multiple policies and multiple other awareness campaigns with the agencies and stakeholders about the battle against single-use plastic. तो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए आसिफ बामला जी जो टिक टिक प्लास्टिक हमने कैंपेन किया था, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ दैट. मैं हूँ मदिहा
और जो सिंगल यूज प्लास्टिक की हम बात along with the United Nations And I Environment think it was Program. very, very scary to see them come with the plastic initially. उनके लिए भी और हमारे लिए भी. ये हमारे डेली लाइफ में एक्चुअली हो रहा है. We are so much of usage of the single-use plastic that we are actually becoming handicapped sometimes, when we don't get single-use plastic. But yes, we are actually changing our mindset. And dropping some facts over there. आपको मालूम है सिर्फ एक हफ्ते के टाइम में आप एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक कंज्यूम कर लेते हैं. कहीं ना कहीं पैकेजिंग के जरिए, पानी के जरिए प्लास्टिक आपके सिस्टम में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है. एक क्रेडिट कार्ड जितना सिर्फ एक हफ्ते में. Just dropping some facts out there. So that's true because what आप जानते हैं कि marine life is something which is very important to our environment. So and it is the single-use plastic, microplastic is creating we're fighting a big battle in the marine, which is marine pollution. उसको भी लेकर के the government is coming up with beautiful policies along with the stakeholders. और जैसे मैंने कहा कि एयर क्वालिटी ऑफ मुंबई जो एक लेवल पे पहुंच गई थी, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव रियली वर्कड हार्ड. एंड देवेंद्र फडणवीस जी ऐसी पॉलिसीज उन्होंने लाई और ऐसी सारी एक्शंस उन्होंने लिए कि विद इन अ वीक्स टाइम और 15 दिन के अंदर वो पोल्यूशन हमारे लेवल हो गए. हम चाहेंगे कि अब हमारे यहाँ के आमदार आशीष शेलार जी प्लीज़ मंच पर अलॉन्ग विद मलाइका अरोड़ा जी, तो प्लीज़ कम ऑन स्टेज. जोरदार तालियां एंड प्लीज़ वेलकम एडवोकेट आशीष शेलार. आशीष शेलार जी प्लीज मंच पर अलॉन्ग विद मलाइका अरोड़ा जी, तो प्लीज कम ऑन स्टेज. जोरदार तालियां एंड प्लीज वेलकम एडवोकेट आशीष शेलार एंड मलाइका अरोड़ा, तो प्लीज कम ऑन स्टेज. जोरदार तालियां फॉर. Come on, ladies and gentlemen, एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए. We've got मलाइका अरोड़ा, a woman जिनका नाम ही उनके काम के लिए काफी है, मलाइका अरोड़ा. And of course we have Mr. Ashish Shelar, who does not know him. Both of them are here with us today for this campaign. Of course we have Mr. Ashish Shelar, who does not know him. Both of them are here with us today for this campaign. Firstly, thank you so much for joining us. दानिश भाई से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो मंच पर आए. एंड आसिफ बामला जी अलॉन्ग विद सहर. Ashish Shelar ji, your thoughts? The government has been really working. No, but we really want to know. Ashish ji, your thoughts on this World Environment Day? Let me congratulate Asif Bhai and Bhamla Foundation for organizing such a wonderful event. Of course, you do that every year. And World Environment Day, many times you have seen the events and the discussions which only lie between the boardrooms. Actually, what needs to be done? What are the impacts of our act? How it is causing a danger to the society, to the marine life, to the common man, that needs to be presented innovatively. And what Bhamla Foundation is doing exactly the same thing, that the percolation, the communication, the dialogue with the society with a very correct way and correct participation, as we have seen today. Malaika ji is here, and therefore I think this kind of bond for the betterment of the society on the World Environment Day itself, I think, which is a very great thing to do. I congratulate Bhamla Foundation. I request all the citizens also to participate by their own way to achieve the sustainability, to see that the no negative impact can come on the environmental issues as such concerned, and let's work together for the same. Thank you so much. थैंक यू आशीष शेलार जी, बिल्कुल सही कहा आपने. हमारा हर एक वो योगदान हमारी धरती के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा. जैसे मलाइका जी ने इस भूमि नमस्कार ने अपना योगदान दिया है. आई वुड रिक्वेस्ट मलाइका जी टू प्लीज शेयर अ थॉट ऑन भूमि नमस्कार ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. Thank you very much. Namaskar everybody. Firstly, I'd like to take this opportunity to thank the Bhamla Foundation, Asif and his wonderful daughter Seher, for making us part of this beautiful campaign, Bhumi Namaskar. I feel truly proud and privileged to be part of it. I'm not here to give you any unnecessary, unsolicited advice, but as a citizen, as a responsible citizen, all I would say is do your bit for your environment, do your bit for whatever is close to you. I think we always say ki a little bit of help starts at home.
बाहर जाने से पहले घर पे स्टार्ट कीजिए. I think that is the most important. And small efforts eventually become big and eventually make a lot of difference in life. So yes, once again, I feel humbled to be standing on the stage with such amazing people. So thank you so much. Sheilaji, it is wonderful to be here for all that you do for our community and everybody sitting here tonight. Thank you all for being present over here. And once again, I'd like to congratulate the Bhamla Foundation. Keep doing the wonderful work that you do. We are just happy to be part of it, and we will extend our support year after year after year. So thank you so much. Thank you, and you did actually, Malaika, you know, with all their contribution for the Bhumi Namaskar, which is the campaign which is launching on the 11th, which you're going to see. Let me give a little heads up on the Bhumi Namaskar campaign, since our Ashish Sheilaji is also here, that this is a campaign that's curated by Al Balki ji. I am perpetually not calling Al Balki ji earlier, because I know if he comes earlier, he might leave earlier. So that's why I want him to stay back for some time to unveil the poster. But it was an idea of Sir's, and we suddenly developed that. And fortunately, we had great people, great minds. Of course, Shan is there, who's curated the campaign. We have Aman, who has done fabulous, who's done the music of Bhumi Namaskar. He has done a fabulous job. Thank you so much, Aman. And of course, the stars who made it big, right from Abhishek Bachchan to Varun Dhawan to Malaika ji, to the great man Jackie Shroff. A very big hand to him. He has done it so fabulously that Balki ji, when he saw the clips, he got more motivated towards getting more better work done, if you remember Balki ji. Because he really did it with the zeal, the heart in which he does it. Thank you so much, Jackie Dada. And there were all many. We have Shreya Ghoshal ji who sang it, and number of actors. And Ashish ji, I will request you to also share that campaign once it's out. It's in the public domain. So that also will send a good message across to all of them. Of course, the stars are going to share it on their platform, but it's going to be by far the biggest campaign with the United Nations Environment Program, and of course the Mahanagar Palika also. Let me tell you, they've also supported this campaign in all ways. We've had Bisleri, who has supported this campaign in a very big way. I have my dearest friend from Bisleri also who's here, and so Mr. Angelo is supposed to come here, but he's not here. We have the Honorable Commissioner here also. I'll just make the Honorable Commissioner sit there for a minute, because we need to... Okay. We will call him to unveil that with Balki sir. Mr. Bhushan Gagrani ji, a very, very big round of applause. I can't hear you guys. Come on, जोरदार तालियों से. महानगर पालिका के महाआयुक्त हमारे भूषण गगरानी जी यहाँ हैं, आल बाल्की साहब के बाजू में बैठे हुए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर. Balki sir, that is Mr. Bhushan Gagrani ji, our commissioner, and Balki sir is the man who curated this beautiful campaign for us. So everyone, once again, thank you, and I think Ashish ji should be. Baki ka you absolutely, Asif bhai, you said it right, and I request Asif Bhamla ji and Malaika ji to present a sapling to Ashish Shelar ji. Do we have a representative from Mufti? Please come on stage. Disha. And all like-minded people are here. Elnaz Rauji, the beautiful actress. Elnaz will receive a sapling from Malaika. देखो ये नुकसान होता है मेरी और फेस ऑफ कैंपेन. Anasia, your thoughts on the environment? Hi everyone, I'm not going to take much of your time. Thank you for having me. Thank you. Special thanks to Bhamla Foundation. I think these kind of events, these kind of initiatives are so important. We can see every day how our world is literally going down in front of us. I'm not going to give too much of gyan because we get too much of that all the time. But what we can do is, we are in the land of Mahatma Gandhi. All of us have heard, be the change that you want to see in the world. So I start with myself.
I try to save water. I try to recycle. Today I'm wearing a dress I've worn before. I know many times we hear actors don't repeat their outfits, but here I am saying we should save energy. We should do, as Malaika very beautifully said, whatever is in front of you. That is what you can do. If you say, one person se to kuch nahi hota hai actually. If 1 million people say, mujhse kuch nahi hoga, then we have 1 million. Yes, then we have a problem. So please start with yourself. And thank you so much again for having me. This is something I really love to support. First time. Yes. Heard so much about it. Thank you so much, sir. Thank you very much. You need to present one award. I request Rich Boys, Gaurav Rich Boys, and Neeti Goyal to please come on stage. Can I have a trophy for Neeti Goyal ji, Nari Neeti? She's been supporting this cyclothon on the World Environment Day, plus all the support to the Bamla Foundation, and he herself has established an organization, Nari Neeti, jo khana chahiye, jo Sonu Sood ji ne kaha, is actually a very hard work of Neeti Goyal ji. I would request Malaika and Ashish Shelaji to present this beautiful trophy to Mrs. Neeti Goyal ji. हमने आपके लिए आशीष जी को रोक के रखा कि आप भी ट्रॉफी लेंगे। इन्हीं के साथ आपके मित्र आने वाले थे, तो मैंने कहा आप यहाँ आ जाए। So this wonderful trophy award, the Green Crusader Award, goes to Neeti. Please join. And another Green Crusader Award to Rich Boy teams. Ashish Shelarji, a small Alana, we welcome Mr. Nadir Godrej. A very, very big round of applause for Nadir Godrej, sir. Michelle, thank you for escorting with sir. A very, very big round of applause for our very, very, very dearest and very nearest patron of the foundation, Nadir Godrej, sir. Thank you so much. I'm so honored that you have been such an inspiration on sustainability, and we learned so much from you, and you always religiously come here. Thank you so much. Thank you very much. और आप देख रहे हैं we have the honorable municipal commissioner of MCGM and administrator Mr. Bhushan Gagrani is here. Okay. Thank you so much. Thank you Shelar Saab. Once again, ladies and gentlemen, please give all of them a huge round of applause. Thank you so much for taking out time and being over here for us, for the environment. एक बार जोरदार तालियां हो जाए Malaika Arora, Ashish Shelar, and for all of our delegates who are here on stage with us. No, but we really want to know things from your end. So ladies, first let's start. We'll start Dr. with Jayashree Sharad and Elnaz Nausir requested to come on stage. Elnaz ma'am, please. Ashish ji, your thoughts on this World Environment Day? Let me congratulate Asif Bhai and Bhamla Foundation for organizing such a wonderful event. Of course, you do that every year. And World Environment Day, many times you have seen the events and the discussions which only lie between the boardrooms.
actually what needs to be done, what are the impacts of our act, how it is causing a danger to the society, to the marine life, to the common man, that needs to be presented innovatively. And what Bhamla Foundation is doing exactly the same thing, that the population, the communication, the dialogue with the society with a very correct way and a correct participation, as we have seen today. Malaika ji is here, and therefore I think this kind of bond for the betterment of the society on the World Environment Day itself, I think, which is a very great thing to do. I congratulate Bhamla Foundation. I request all the citizens also to participate by their own way to achieve the sustainability, to see that the no negative impact can come on the environmental issues as such concern, and let's work together for the same. Thank you so much. थैंक यू आशीष शेलार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा हर एक वो योगदान हमारी धरती के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। जैसे मलाइका जी ने इस भूमि नमस्कार ने अपना योगदान दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट मलाइका जी टू प्लीज शेयर ऑन भूमि नमस्कार एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सोलो हो जाए, एक खाली बस सोलो नहीं मिला भाई सर, एक में करते हैं। Firstly, I'd like to take this opportunity to यहाँ पर देखे, यहाँ पर the Bhamla Foundation, Asif and his wife for making us part of this beautiful campaign that we will start. I'm truly proud and privileged to be part of it. I'm not here to give you any unnecessary, unsolicited advice, but as a citizen, as a responsible citizen, all I would say is do your bit for your environment, do your bit for we always say that you do. We are just happy to be part of it, and we will extend our support year after year. So thank you so much. Thank you, and you did actually, Malaika, you know, with all your contribution for the Bhumi Namaskar, which is the campaign which is launching on the 11th, which you're going to see. Let me give a little heads up on the Bhumi Namaskar campaign, since our Ashish Shelaji is also here, that this is a campaign that's curated by Al Balki ji. I am perpetually not calling Al Balki ji earlier, because I know if he comes earlier, he might leave earlier. So that's why I want him to stay back for some time. Promenade, Joggers Park और ऐसे बहुत सारे गार्डन जिनको आज रीडेवलप करके आशीष शेलार जी ने has created a very beautiful environment. जग्गू दादा ने आज मीडिया आपके लिए बिल्कुल तैयार थी for the special You know, आप सभी ये जानते होंगे कि जग्गू दादा जहाँ कहीं भी जाते हैं तो एक प्लांट अपने साथ लेकर जाते हैं, लाइक हिज पेट प्लांट। उस प्लांट के बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं। मैं आपको इस स्टोरी के बारे में, इस जेस्चर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी कि बिकॉज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के टाइम पे रेगुलरली भामला फाउंडेशन का ये इवेंट करते आए हैं, और इस इवेंट में जैसे कि आपने देखा कि हमारे जितने भी डेलीगेट्स आते हैं उन्हें हम एक प्लांट सैपलिंग देते हैं। rather than giving them anything that's plastic, we give them something living and breathing that's a plant. And Jaggu Dada also somewhere got inspired by that gesture, और उन्होंने उस gesture को nationally नहीं internationally famous कर दिया कि आप वो कहीं पर भी जाते हैं तो अपने साथ एक छोटा सा plant sapling लेके जाते हैं। हर red carpet, हर छोटे से बड़े event में you can see Jaggu Dada holding a plant sapling very very proudly. So छोटी सी शुरुआत जो हम यहाँ पर करते हैं उसका बहुत बड़ा impact होता है। ये उस स्टोरी को बताने का एक बस छोटा सा किस्सा है आप लोगों को। बिल्कुल सही मध्या, एब्सोल्युटली राइट। और जैसे कि हम जानते हैं, we've been having Saurav Chaturvedi from Runwal Group is already here with us from Yulu Bike Cycle. If anyone here from Yulu, please come on stage. Ladies and gentlemen, we have a lot of guests, a lot of stars coming in over here. We have Rashi Khanna, जिन्होंने अभी हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, और एक बार फिर पता नहीं मेरी बातों का कितना ही असर होगा आप पे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग जाएंगे, आपसे मिल रहे हैं, वो है यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। स्पेशली ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पर, अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप बैठ जाए आराम से। ऑल ऑफ आवर लवली स्टार्स आर इन्फ्लुएंसर्स, पीपल जिन्हें
जिन्हें हम यूजुअली स्क्रीन्स पर देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, अपनी मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर देखते हैं, वो आज यहाँ पर हमारे बीच आए हैं. They've all come for you. Please take a seat, be seated and enjoy the entire event as it flows. जैसे कि मैंने कहा, ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सुनने वाला है मेरी बात को. A very important one issue, that is environment. जरूरी है बेटा, ठंडा हवा भी जरूरी है डार्लिंग. 50 डिग्री बोलते हो गया तो 60 डिग्री होने में नहीं लगेगा. अभी शाम पत्ती छोड़ और शुरू कर प्लांट लगा. लगा चुका हूँ. हाँ लगा बेटा, लगा दे रहे बेटा, जितना लगाएगा. हाँ मेरी जान तो समझ लेना, हमने बहुत मारा था पटवा. तो जैसे आपने देखा कि हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट भूमि नमस्कार. देयर आर प्लांट्स, देयर आर बर्ड्स. बांद्रा के ब्यूटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा योगदान आशीष शेलार जी का रहा है. बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोमेनाड, जॉगर्स पार्क और ऐसे बहुत सारे गार्डन जिनको आज रीडेवलप करके आशीष शेलार जी ने हैज क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. जग्गू दादा ने आज मीडिया आपके लिए बिल्कुल तैयार थी फॉर स्पेशल. आइए. आप सभी ये जानते होंगे कि जग्गू दादा जहाँ कहीं भी जाते हैं तो एक प्लांट अपने साथ लेकर जाते हैं, लाइक हिज पेट प्लांट. उस प्लांट के बारे में काफी सारी बातें करते हैं. इवेंट करते आए हैं और इस इवेंट में जैसे कि आपने देखा कि हमारे जितने भी डेलीगेट्स आते हैं उन्हें हम एक प्लांट सैपलिंग देते हैं. रादर देन गिविंग देम एनीथिंग दैट्स प्लास्टिक, वी गिव देम समथिंग लिविंग एंड ब्रीदिंग दैट्स अ प्लांट. एंड जग्गू दादा आल्सो समवेयर गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट जेस्चर और उन्होंने उस जेस्चर को नेशनली इंटरनेशनली पीछे हो जाओ यार कि आप वो कहीं पर भी जाते हैं तो अपने साथ एक छोटा सा प्लांट सामने लेके जाते हैं. हर रेड कार्पेट हर छोटे से बड़े इवेंट में आप भी जग्गू दादा होल्डिंग अ plants happening very very proudly. So छोटी सी शुरुआत जो हम यहाँ पर करते हैं उसको बहुत होता है. ये उस स्टोरी को बताने का एक बस छोटा सा हिस्सा है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और जैसे कि हमने क्लोथिंग फैशन एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ में. मुफ्ती से if I have someone from Mufti to please come. Can I have someone from Mufti? Disha, if she's around. Please come on stage. Disha is around. Jaggu Dada is a people man. वो लोगों के साथ घुल रहे हैं, मिल रहे हैं. But if I have someone from Mufti, Andrew Kushlani or Disha Shetty from Mufti Clothing. मत मार यार कम से कम. यहीं से जूम करो. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि we've been having Saurabh Chaturvedi from Runwal Group is already here with us. From Yulu bike cycle, if anyone here from Yulu, please come on stage. गिर रहा है यार, करने को दे. Ladies and gentlemen, we have a lot of guests, a lot of stars coming in over here. We have Rashi Khanna, जिन्होंने अभी हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है. और एक बार फिर पता नहीं मेरी बातों का कितना ही असर होगा आप पे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें. काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग जाएंगे, आपसे मिल रहे हैं, वो है यहाँ पर. तो आप थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें. स्पेशली ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पर, अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप बैठ जाएं आराम से. ऑल ऑफ आवर लवली स्टार्स आर इन्फ्लुएंसर्स, पीपल जिन्हें हम यूजुअली स्क्रीन्स पर देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, अपनी मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर देखते हैं, वो आज यहाँ पर हमारे बीच आए हैं. They've all come for you, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं. अब हम बांद्रा में जहाँ खड़े हैं यहाँ पे रोजाना आप लोग वॉक करते हैं, समथिंग दैट्स वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो. आज उसी जगह पर हम यहाँ पर ये इवेंट होल्ड कर रहे हैं. एंड एवरीबडी हु इज हियर is for you. So once again, a very humble request to anybody who is there in the front, if you don't have a very important work, please take a seat, be seated and enjoy the entire event as it flows. जैसे कि मैंने कहा, ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सुनने वाला है मेरी बात. नहीं मतलब सुन रहे हैं लोग. पर्यावरण में बदलाव आ रहा है. पीपल आर टेकिंग रियली गुड इनिशिएटिव फॉर. सभी लोगों से मिल रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज वन थिंग अबाउट जग्गूदा which is not special to just this event. मैंने उन्हें कई सारे मौक़ों पर मैं उनसे मिली हूँ और हर बार मैंने देखा है कि वो जाके हर एक इंसान से मिलते. हमारे ऑफिस आए थे, he met everybody from the IT people to the people who were there in the pantry. A man with a golden heart, ladies and gentlemen, give a huge round of applause.
मिस राशि खन्ना, आपने देखा होगा फर्जी और ऐसे कई सारे OTT में द सुपरस्टार राशि खन्ना टू प्लीज कम ऑन स्टेज along with the man who created Bhumi Namaskar, Mr. R. Balki, also to please come on stage, and the founder of Hangama Music, the partner of the Bamla Foundation Bhumi Namaskar campaign, Mr. Neeraj Roy, also to please come on stage. Mr. R. Balki, zordar taaliyan for all these wonderful people. And Mr. Gaur Gopal Das also to please come on stage. You can see these wonderful people coming on stage and talking about one single agenda, which is environment. And Jackie Dada, please. आप आगे आए, जग्गू दादा. वक्त का पूर्ण प्रयोग करें, हर एक इंसान से मिले. He's right now meeting a lot of people on backstage side. लेकिन जग्गू जी, we request you to please join us on stage. Siddesh Sharma ji from Baidyanath to please come on stage. Siddesh. Bhavin, we are going to unveil the poster of Bhumi Namaskar. Are we ready? So. Okay, I'm going to take you. So Asif, I want all this eyes on the screen as we're going to launch Mr. Nadir Godrej ji, the campaign of Bhumi Namaskar. So I request everybody in the audience and on stage to please turn around and have a look at the launch of Bhumi Namaskar. Bhavin? So this is World Environment Day. Bhumi Namaskar. So I request everybody in the audience and on stage to please turn around and have a look at the launch of Bhumi Namaskar. Bhavin? So this is World Environment Day. Bhumi Namaskar, conceptualized by Mr. R. Balki, championed by Mr. Asif Bamla, lyrics by Mr. Prasun Joshi, empowered by Mr. Neeraj Roy. इसके बारे में और this is completely supported wholeheartedly from MCGM Mumbai Mahar. Such Mr. Aman Pant, the music director of Bhumi Namaskar, to please come on stage along with Mr. Varun Dhawan, Abhishek Bachchan, Shekhar Rijwani, Malaika Arora. Have you seen that she was here? And all these artists have come together with Bhumi Pednekar, also talking about Bhumi Namaskar. Bhumi Namaskar के बारे में ज़्यादा बताने के लिए मैं चाहूँगा आसिफ बामला जी, आप अपने बारे में भूमि नमस्कार के बारे में लोगों को बताएं. A very warm evening to everybody. I request the Honorable Municipal Commissioner, sir, to please come here. Jackie Dada, aap aiye. You're the face of the campaign. Gaur Gopal Das. We always need a very religiously right person to give the blessings when वो कहते हैं ना शुभ शगुन मानते हैं और भूमि नमस्कार स्वयं एक शुभ शगुन की बात है. Mr. Godrej, please can we have you? And of course the man who thought about the entire theme, Mr. R. Balki is here. Can I also request Romanchak Arora, if you don't mind? Romanchak, can we have you on the stage? Romanchak Arora, the creative, the director, Neeraj producer. Roy of Hangama is here in a huge round of applause. Please can we have you also here? Shan ji, aap aiye, और Aman ji, aap bhi aiye यहाँ. Romanchak is, as usual, a very casual man, unlike me. Huh? Rashi Khanna ji, aap bhi aiye यहाँ with, on the left. So let me first tell you all that Mahanagar Palika, when it heard the theme, which was curated by Mr. Balki, it lended us the support of offering us the logo of the Mahanagar Palika, the background support of the gardens, which was supported by Mr. Visputeji. Visputeji is our local H-West ward officer. Is he around here? A very, very big round of applause, sir. विस्पुते जी की शिकायत रहती है कि हम अमूमन भूल जाते हैं उन्हें, जो हम कभी भूल भी जाते हैं. लो इस बार आपकी शिकायत कोई नहीं रहेगी सर. थैंक यू सो मच. तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो है हमारे जो मार्गदर्शक हैं मिस्टर गोडरेज, in a very short way, if you can explain a little bit of and on environment. I would like to begin with Mr. Godrej because he has been a great inspiration to us, a man who we look up and upon to for all our environmental endeavors, because Godrej as a corporate has been a very sustainable brand.
So without taking a lot of time, I give Mr. Nadir Godrej. Zordar taaliyon se, I can hear your voice. Zordar taaliyon se. A very big round of applause to Godrej. If I can also request Michelle to please come up on the stage. Thank you so much. And if I request my friend from Bistri, please, my dear friend, please come over. Rahul, na? So let me begin with Mr. Nadir Godrej saying a few words. Thank you so much. Thank you everyone, welcome. It is no longer climate change within a tolerable range. A crisis is what it's about, with fires, floods, as well as drought. And on this World Environment Day, let's resolve to find a way. This year's issue, we understand, is preservation of our land. Now at Godrej, our CSR helps to take us very far. Multiple benefits is what one sees with water projects or growing trees. Good livelihoods are created, our carbon emissions are abated, different species can be tried, useful products can be supplied, like biomass or edible fruits, and yet the trunk and the roots can sequester carbon, clean the air, a win-win that is very fair. We have many kinds of biomass, groundnut shells, straw, or bagasse, high-energy bamboos on the way. A major role it can play. The energy density is high. It's something that we need to try. Much progress we will see with the latest technology. If India is to achieve its goal, technology must play a role. The right incentives are what we need. If they're in place, we can succeed. Regenerative agriculture has a role to play. Tree-borne food is another way. In India, oil palm will rapidly grow. From Pongamia, many benefits flow. New varieties have high yield, unlike oil seeds grown in the field. The roots and trunks are a carbon store. For many years, they can endure. Terviva could ingeniously succeed in converting this inedible seed into something you and I can eat. Indeed, an extraordinary feat. We can replace fruit from fields with better food and higher yields from trees that are very green. Many benefits can be seen. Yes, CSR can be a hit, but everyone must do their bit. Reduce your waste, plant a tree, consume less electricity, no matter whether big or small, just take a sustainable call. Do not do it in isolation, spread the word in every nation. The support from Maharashtra state has always been very great. Our thanks to the Bamla Foundation, the Environment Ministry of our nation, Greater Mumbai Municipal Corporation, the Environment Program of United Nations, and Bollywood Hangama for spreading the message very far. And to everyone who came here to both support as well as cheer, if all of us cooperate, climate change will abate. We must act now. We shouldn't wait. It's not too late to change our fate. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Nadir Godrej ji. You actually spoke about the real work what Godrej industry is doing. Jackie Shroff ji. सभी को सादर प्रणाम. स्टेज पे उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्यार. बच्चे लोग, आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे, देख रहे नहीं देख रहे, मालूम नहीं. 50 डिग्री हुआ है, 60 डिग्री होने में टाइम नहीं लगेगा, जल के मरेंगे. अभी भी सुधर जाओ तो अच्छा है भाई लोग. अपने लिए नहीं, अपने छोटे बच्चे लोग आए उनके लिए झाड़ लगाने की कोशिश करो और दिमाग शांत रखो. कोशिश करो एनवायरनमेंट, जैसा बामला बाबा बताते रहते हैं, हर साल नहीं, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ करते रहते, वैसे करते रहे वो. और आप लोग भी करो साथ में मिलके. एक का ही काम नहीं है, सबका काम है बॉस. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर लिविंग बिहाइंड फॉर द चिल्ड्रन. कोई इंग्लिश समझ में आता है, पीछे वाले को नहीं आता होगा तो नहीं, कुछ सुना तो सुना ठीक, नहीं सुना तो नहीं सुना, मगर झाड़ लगा रहे. देख कहाँ से झाड़ निकल रहे, ले बाज देख ले. अगर अभी नहीं निकालेंगे झाड़, हर जगह से तुम्हारे झाड़ ही होना चाहिए. ऑटो रिक्शा में होना चाहिए, समझा? ऑटो रिक्शा भर के होना चाहिए. सब ऑटो रिक्शा में लगाओ, मैं तो बोलता हूँ. और मैं कोशिश करूँगा कि उनकी यूनियन से बात करके दे दूँ. बाकी आप बड़े सब लोगों को, बाल्की साहब थैंक यू, शान सुपर, थैंक यू मैम, थँक यू बॉडीज. थँक यू. सबको बहुत प्यार. जय जय महाराष्ट्र. जास्त टेन्शन घ्यायचं नाही.
झाडं लावायचं. I request R. Balki ji, please, a few words on exactly the beautiful campaign which you created on Bhumi Namaskar. I don't think I could have said it better than what Jackie has done. But I think just one thing, we all say namaskar to a lot of people, a lot of things every day. At least sometimes, let's just do namaskar to the earth. And that's all this campaign is. I hope you all know what has to be done. The number of things that need to be really urgently addressed. And Mr. Bamla will tell you this every 3 months, every day of the year. And I just want to say, the World Environment Day is not one day, it's every day of our lives. Thank you, Mr. Balki ji. And I request Mr. Gaur Gopal Das ji to please share your thoughts on this wonderful day. It's my great pleasure, privilege and honor to be here this evening, and I want to thank Mr. Asif Bamla and the Bamla Foundation to give me this opportunity to be here this evening. My respects to all the dignitaries present here on the stage and of the dais as well. Let me just tell you a quick story that probably tells us what we need to do in regards to environment and our life as well. Once a teacher asked a class of 7-year-olds and gave them an assignment. The assignment was, she said, I want all of you to write a sentence. And the kids thought that's not a big deal. Yeah, but my condition is, it should be a sentence of 10 words. The kid said, that's not a big deal as well, writing a sentence of 10 words. The teacher said, but I want each word to be a 2-lettered word. If, be, to, me. So 10 words in a sentence, but each word to be only 2 letters. Now the kids were thinking it's a difficult assignment. And then the teacher said, most important of all, I want it to be a meaningful sentence. Otherwise you could say, if be, me, too, but. If be, me, too, is. The kids scratched their heads and they just couldn't come to a conclusion. And finally the teacher wrote on the board the first 5 words of the 10-worded sentence. If it is to be. If it is to be. And the kids were wondering what are the next 5 words of the sentence. And the teacher wrote on the board, if it is to be, and the next 5 words were, it is up to me. If it is to be, it is up to me, right? If we are wanting the environment to change, don't think the other person, our Jackie Dada says all the time, jhaad patti lagane ka bidu. Make some loud noise for Jackie Dada, guys. And he said so beautifully that it's not one person's responsibility, it is our responsibility together to make that change so the future will be bright. My congratulations to Balki sir and the entire team for coming up with this Bhumi Namaskar campaign. Thank you very much. Thank you so much, sir. Your every statement, what you say is very thoughtful and we follow you. I request Mr. Bhushan Gagrani ji to please say a few words. On behalf of Municipal Corporation of Mumbai, I wish all the best and my best compliments on this World Environment Day program. We are very proud to associate ourselves with Bamla Foundation, who have been doing this phenomenal job. As a Mumbaikar, you may take a pride with the fact that ours is the first city of India which has done the climate budgeting. Now you may ask, what is that climate budgeting? So I'm not going to describe the technical details, but as Guruji just said, if it is to be, then we have to be there. So it is up to me. जाकी दादाने आपल्याला सगळ्यांना सांगितलं झाड लावा. मी त्याच्या पुढे जाऊन एक पाऊल सांगतो की झाड लावा आणि झाड जगवा. So thank you very much and I wish all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And BMC is actually doing amazing job. I would request to sir to please felicitate few of our important recipient of the awards. आपने देखा होगा कि there are people who are actually working towards the environment, but there are people actually fighting for the right thing.
कुछ दिनों पहले कुछ हादसा हुआ and the women came out on street to fight for the right. The bravery award goes to Raveena Tandon ji to please come on stage for all the good work fighting for a common man. Raveena Tandon ji to please मंच पर आए, भूषण गगरानी जी and Mr. Nadir Godrej to please give away the award. And Mrs. Pallavi Choksi ji for all the good work for the environment she has been doing. ये गांव-गांव जा कर के लोगों के बीच में रह कर के प्लास्टिक पोल्यूशन हो, उन सब का काम पल्लवी Choksi ma'am to please come on stage along with Vardhaman and Rishabh also. And ladies and gentlemen, we have Raveena Tandon on stage. Can I have the award of Raveena Tandon? आप सभी जानते हैं that recently she's always been so inclined towards helping the community. कोई भी Bandra में any project, she's always the first person to come up. Recently there was also an incident with her driver where she stepped up and helped the driver. She is truly the image of courage in our Indian film industry. Ladies and gentlemen, please give Raveena Tandon a huge round of applause. And the next award to Pallavi Choksi ji. आइए. Can I have the sapling also to be given? Excuse me, madam. And this award by Mr. Nadir Godrej and all to Pallavi ji. Yeah, I just, yeah. Thank you so much. अब मैं Rishabh and Vardhaman Choksi to please join this. Few more palace station. I would request Mrs. Neha Jagtiani ji also to please come and award and receive the award from Mr. Nadir Godrej and Mr. Bhushan Gagrani ji. Team Bestseller to please come up and receive the award from Bestseller. Team Mufti, Mr. Tushar Malhotra ji from Bisleri to please receive this award from Mr. Bhushan Gagrani ji and Mr. Nadir Godrej ji from Bisleri. This award by Mr. Bhushan Gagrani ji to Neha Jagtiani ji. Award to Mr. Tushar Malhotra from Bisleri by Mr. Bhushan Gagrani ji and Mr. Nadir Godrej to present it to Bisleri. Mr. Tushar Hiranandani to please receive this award. If is here, Mr. Tushar Hiranandani ji. And Mr. Subodh Runwal from Runwal Group are requested to please come on stage. Mr. Subodh Runwal, the chairman of Runwal Group, is requested to please come on stage. Mr. Subodh Runwal. Highback say we have Shreya to please receive the award. Shreya and Asif to receive the award from Highback. Mr. Inder Kataria from Everglow to receive this sustainable award from Mr. Bhushan Gagrani ji, Everglow. Everglow. Mr. Bhushan Gagrani ji to felicitate Mr. Inder Kataria. I will request Rashi Khanna ji to give away this award. The other award to HMA Group. Sorry, to Mr. The Highback. Please come. Mr. Danish Khan to receive the HMA award. Mr. Danish bhai, please आइए. HMA award for the sustainable partner of Bhamla Foundation. and once again would request Ms. Rashi to kindly present this set of award as well. And a very special award given to by Mr. Bhushan Gagrani. Would request Ms. Rashi to kindly present the award to Mr. Danish. From Lalani Group.
Mr. Shan Lalwani from Vruksh. We request Mr. Shan Lalwani from Vruksh to kindly come on stage. Mr. Subodh Runwal ji also says big round of applause for the Runwal group. Okay, Ravina ji, please. आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। पहली बार एक ब्रेवरी अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि हम सब में कहीं ना कहीं इंसानियत भरी पड़ी है और जहाँ तक हम सोचते हैं, चाहे हमारी भूमि हो या हमारे आजू बाजू के दोस्त हो या हमारे कर्मचारी हो या हमारे साथ रहने वाले लोग हो, हम यही चाहते हैं कि सारे सुरक्षित हों, साथ रहें, प्यार से रहें। और ये हमारी एक ही भूमि है, एक ही प्लैनेट है जो हमें आगे वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हेल्दी प्लैनेट देना है। हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है, यही है जो हमारी धरती है, आपकी है, मेरी है, हमारे आगे वाले बच्चों की है। तो प्यार और मोहब्बत से हम अपनी ये मातृभूमि को भी बहुत एक मोहब्बत ही नहीं, लेकिन जैसे कहें कि उसे हरा भरा और स्वस्थ भी बनाएं। हेल्दी प्लैनेट विल ऑलवेज हैव हेल्दी जनरेशंस अहेड। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आसिफ बामला जी, एंड आई थिंक आप बहुत अच्छा काम करते हैं। कहाँ गए आसिफ बामला जी? इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैंने ये जो हमारा एनवायरनमेंट डे का फंक्शन है उसके जन्म से देखा है और आज तक, एंड इट ओनली गेट्स बिगर एंड बेटर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और आपकी मेहनत को। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ravina ji. I request Parvez Lakdawala ji to please come on stage. Parvez bhai, please आप stage पर आएं. I welcome Fardeen and Taha who are sitting in the audience. I'll be calling you guys. And Ritvik is also there. I can see you guys. A very very big round of applause for these superstars. These superstars of the Hira Mandi are here. So I'm just going to be calling you all in the next round. So, and Fardeen, people want to see you more. I would request Mr. Bhushan Giranaji to please felicitate Mr. Subodh Runwal ji with his beautiful sapling. And Bhushan ji to please present this award, a sapling to Mr. Parvez and Nadeem Lakdawala. And to hear from someone who is very young, someone who talks about social subjects so much, who's always acting on subjects which is really related to so ladies and gentlemen, please welcome Rashi Khanna ji to please say a few words. Rashi ji, aap aiye, the people have been waiting the moment. Yeah, but let us speak and then we'll. जितने भी लोग स्टेज पे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आप सब लोग जो आए हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द Bhamla Foundation who have called me here today. R. Balki sir, and congratulations for making this beautiful thing that I'm yet to see, but I'm sure it will be amazing, something that we all need to see and learn from. Bhamla Foundation हर साल कोई ना कोई इनिशिएटिव करती रहती है, चाहे वो पेड़ पौधे लगाना हो या फिर बीचेस साफ़ करना हो, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को बेहतर बनाती हैं। मैं भी अपने बर्थडे पे एक्चुअली एज अ ट्रेडिशन हर साल पेड़ पौधे लगाती रही हूँ, बट आई फील लाइक एज समबडी सेड हियर टुडे ऑन स्टेज दैट यू नो एनवायरनमेंट डे इज़ नॉट सपोज टू बी जस्ट वन डे. It's supposed to be every day. We are supposed to celebrate the environment for all that it has given us. और हम इन छोटे छोटे वेज में इस प्लानट को बेहतर बना सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. तो बहुत ही खुशी है आज यहाँ पे इन सब के बीच होना, to be a small part of this initiative, and I hope we keep making and doing things that help our environment in the future. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, and keep doing this beautiful work you've been doing. There's few felicitation which here is actually
wanting them to call on stage. Sapling to Mr. Harsh Gupta, sapling to Mr. Shreya Godawat ji, Paulami Sangvi ji and Lucky Morani ji, wherever you are, please come on stage. I request Mr. Harsh Gupta to please come on stage. Shreya Godawat ji, Paulami Sangvi ji and Lucky Morani ji to please come on stage. And present the sapling to all dignitaries. I request Mr. Bhushan Gagrani ji to please felicitate our eco jams actually, Mr. Harsh Gupta, Shreya Godawat, Paulami Sangvi and Lucky Morani ji. Yes, absolutely. Okay. And a very special award to Mr. Neeraj Roy, Hangama team by Mr. Nadir Godrej and Bhushan Gagrani ji. To Bollywood Hangama team, the founder, Mr. Neeraj Roy. I request Mr. Nadir Godrej to present this small momentum from the Bamla Foundation to Mr. Neeraj Roy. Mr. Gaur Gopal Das ji, Ravina Tandon ji, Asif Bamla ji present this special moment to Mr. Nadir Godrej ji from the Bamla Foundation for all the work doing in sustainability. A big round of applause from Mr. Nadir Godrej, the entire Godrej team, the Godrej community for supporting this very big round of applause to Mr. Nadir Godrej. A very big round of applause to Mr. Nadir Godrej. Thank you so much, Mr. Godrej, on all the work on sustainability that you've been doing. Shan, you remember we were talking about Mr. Nadir Godrej. So you are an inspiration even now to all the youngsters and everybody. We are so honored that normally Mr. Godrej, it's very difficult to, with his busy schedule, to remove a time. But sir, when he heard that the Honorable Commissioner is coming and when he knew that we have the blessings of the Mahanagar Palika for a cause like this, he totally accepted to come here for this. Mrs. Chokshi, thank you so much and hearty congratulations for all the good work you've done. Parvez bhai, Subodh bhai, आप पीछे हो लेकिन फिर भी नजर आते हो. आप पीछे रहने वाले ज़्यादा तो थोड़ा सा आप आगे आइए. हमारे HMA के हमारे भाई साहब भी यहाँ आए all the way from Delhi. So all of them and Shan once again, हमारा main program तो 11 को. Let me tell you, this song of Bhumi Namaskar, आज आप लोगों ने उसका टाइटल और उसका जो पोस्टर है उसका अनावरण देखा. इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 को है at the हंगामा ऑफिस. सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूँ तो आपने सिक्योरिटी और व्यवस्थाओं का बंदोबस्त कर दीजिएगा. तो 11 तारीख को ये गाने का अनावरण है जिसमें अभिषेक, वरुण धवन सारे इसमें इन्वॉल्व है. शान ने बहुत खूबसूरत गाया. अमन, a very big hand to Aman. I would want Shan is a host, so Shan, you please give a sapling to Aman because Shan को हम sapling दे ये मुनासिब नहीं है. तो शान अपने मुबारक हाथों से अमन को सम्मानित करे क्योंकि संगीतकार ही एक संगीत की लय को जान सकता है. और थैंक यू सो मच अमन जी. दिस इज अ ग्रेट थिंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी. लकी जी नमस्कार. हाउस मोहम्मद भाई इज बिजी. थैंक यू गुरुजी. थैंक यू सो मच. People want to hear you more though. I got few messages that Gaur Gopal Das ji, along with the Honorable Commissioners, again giving an award, re-giving an award to Subodh ji. A very big round of applause to Runwal Group for always standing strong on causes of sustainability for the environment and with the environment. Thank you so much. So one small sapling to the trophy to Mr. Aman Pan by Mr. Nadir Godrej. This small Aman Pan ji. Aman ji is going to get an award for doing such a beautiful musical score. हमें देना चाहिए था 11 को लेकिन नादिर सर नहीं आएंगे तो मैंने कहा आप अभी ले लीजिए. हाँ 11 को सर के 2 डेट्स 3 दिन में नहीं मिल सकते. हमारा सौभाग्य के एक ही हमें बड़े मुश्किल से मिल गया. So we are blessed that we got this. Thank you so much. Thank you so much everybody.
We really thank everybody for. Share should be around. Share your. I think the sapling for Lucky Murani ji actually was here by Mr. Nadir Godrej. Yes, please give it. Thank you. Thank you each and everyone. Now let's. Can I have a group picture? Siddesh Sharma ji ko ek sapling Mr. Nadir Godrej will give. Siddesh Sharma from Baidnath Group tilled the most powerful pain relief which been launched by Siddesh Sharma ji. Please give away this Mr. Godrej to Mr. Siddesh. And towards the end, I would request everybody present on stage to kindly come together for one photo op. We request all of our delegates and dignitaries to kindly come together. We have a lot of people who are waiting over here to click a picture. All the delegates who are on stage, I request you all to kindly come together for a picture because photographs memories hote hain. Where's Shan? Mr. Rohit Pandit actually to receive the last award. Rohit Pandit, आइए. Rohit Pandit ji from. रोहित जी आइए. आपने बहुत सारी अस्पतालें बनाई हैं मध्य प्रदेश में. रोहित पंडित जी, या आपने कई सारी अस्पतालें बनाई हैं रोहित जी इन मध्य प्रदेश और आपने काफ़ी अच्छा काम किया है. थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. कैन Mr. Nadir Godrej will give away this special award. Thank you so much for your patience, for being on stage, each and every delegate, each and every star who's been here I request with the media us. to please give the space to our dignitaries to present. Raveena ji, Neeraj ji, Nadir Godrej ji, every single person, thank you so much for being with us on stage. Photo viral. So once again, thank you to all of our stars, all of our delegates कि उन्होंने टाइम निकाला, वो यहाँ पर आए, इतनी देर हमारे साथ स्टेज पर रहे, इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें करें. बट we've spoken a lot, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की है आपको यहाँ पर स्टेज पर. अब थोड़ा उसे डिटैच करते हैं. We have another performance coming up for. नमस्कार कर लोगों को बताएं. Very warm evening to everybody. I request the honorable please come here. Jackie Dada, you are the face of the campaign. Religiously right person की बात है. Can we have you? And of course, the man who talked about the entire team, Mr. R. Balki is here. Can I also request Romanchak Arora, if you don't mind? Romanchak, can we have you on the stage? Romanchak Arora, the creative, the director, producer. All of Hangama is here in a huge round of applause. आराम से विशाल. Shan ji, आप आइए. Aman ji, आप भी आइए यहाँ. Romanchak is, as usual, a very casual man. Unlike me. Rashid Khanna ji, आप भी आइए यहाँ. So let me first tell you all that when it heard the theme, which was curated by Mr. Balki, it lended us support. Offering us the logo of the Mahanagar Palika, the support of the gardens, which was supported by Mr. Vispute ji. Vispute ji is our local H-West ward officer. Is he around here?
a very big round of applause. पप्पी जी की शिकायत रहती है पप्पी हो जाए जो हम कभी भूल भी जाते हैं जो इस बार आपकी शिकायत थैंक यू सो मच पीछे चले जाऊंगा हमारे जो मार्गदर्शक हैं मिस्टर गोदरेज प्लीज if you can explain a little bit of and on environment. I would like to begin with Mr. Godrej because he has been a great inspiration to us, a man who we look up and upon for all our environment and health, because Godrej as a corporate has been a very sustainable brand. Please, my dear friend, please come over. One water, two water. उनको देखना है. So let me begin with Mr. Nadir Godrej saying a few words. Thank you. Thank you everyone. Welcome. It is no longer climate change within a tolerable range. A crisis is what it's about, with fires, floods, as well as drought. And on this World Environment Day, let's resolve to find a way. This year's issue, we understand, is preservation of our land. Now at Godrej, our CSR helps to take us very far. Multiple benefits is what one sees with water projects or growing trees. Good livelihoods are created, our carbon emissions are abated, different species can be tried, useful products can be supplied, like biomass or edible fruits, and yet the trunk and the roots can sequester carbon, clean the air. A win-win that is very fair. We have many kinds of biomass, groundnut shells, straw or bagasse. High-energy bamboo is on the way. A major role it can play. The energy density is high. It's something that we need to try. Much progress we will see with the latest technology. Do their bit. Reduce your waste, plant a tree, consume less electricity, no matter whether big or small, just take a sustainable cause. Do not do it in isolation, spread the word in every nation. The support from Maharashtra state has always been very great. Our thanks to the Bamla Foundation, the Environment Ministry of our nation, Greater Mumbai Municipal. कुछ दिनों पहले कुछ हादसा हुआ and the women came out on street to fight for the right. The bravery award goes to Ravina Tandon ji. To please come on stage for all. Award to Mr. Tushar Malhotra from Bisleri by Mr. Bhushan Gagrani ji and Mr. Nadir Godrej to present it to Bisleri. Mr. Tushar Hiranandani to please receive this award. It is here, Mr. Tushar Hiranandani ji, and Mr. Subodh Runwal from Runwal Group are requested to please come on stage. Mr. Subodh Runwal, the chairman of Runwal Group, is requested to please come on stage. Mr. Subodh Runwal. High back say we have Shreya to please receive the award. Shreya and Asif to receive the award from High back. Mr. Inder Kataria from Everglow to receive this sustainable award from Mr. Bhushan Gagrani ji, Everglow. Everglow. Mr. Bhushan Gagrani ji to felicitate Mr. Inder Kataria. Bye. Side of I will request Rashi Khanna ji to give away this award The other award. to HMA Group. Sorry, to Mr. To the High back. Please come. Mr. Danish bhai, please आइए. HMA award for the sustainable partner of Bamla Foundation. And once again, with request
Ms. Rashi to kindly present this set of award as well. Please, sir. And a very special award given to by Mr. Bhushan Gagrane. सर एक सर खाली बस बैठ के ले लो We request Ms. Rashi to kindly present the पीछे हो award जाओ to Mr. Danish. From Lalani Group. Mr. Shan Lalwani from Brooks. We request Mr. Shan Lalwani from Brooks to kindly come on stage. Mr. Subodh Runwal Jones. Big round of applause for the Runwal Group. Okay, Ravina ji, please. आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। पहली बार एक ब्रेवरी अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि हम सब में कहीं ना कहीं इंसानियत भरी पड़ी है और जहाँ तक हम सोचते हैं, चाहे हमारी भूमि हो या हमारे आजू बाजू के दोस्त हो या हमारे Please come on stage. I request Mr. Harsh Gupta to please come on stage. Shreya Godawat ji, Paulmi Sangvi ji and Lucky Morani ji. Gupta, Shreya Godawat, Paulmi Sangvi and Lucky Morani ji. And can we have the Shamak Davo team performing on Bhumi Namaskar? ये जाने को जगह छोड़े Wonderful children have been seen in the video which you are launching on the 11th. Thank you so much. मुझे पता है आपके घुटने चले गए थे जब हमने शूट कर रहे थे. Thank you for all the love. And now Madhira, you take over our next performance. All right, so performance का सिलसिला चालू हो चुका है. We have entertainment after entertainment for all of you all. लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी entertainment होता है, it comes with a message. तो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करे मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी the very famous. The next performance is going to be by the very famous music composer Mr. Aman Pal. But before मैं उन्हें स्टेज पर यहाँ पर बुलाऊँ, थोड़ा बहुत आप लोगों से इंटरैक्ट कर लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को समझ लेते हैं. See, हम लोग सब मुंबई ही रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में भी बहुत सारे डिवीजन हैं. I truly want to understand यहाँ पर कितने लोग मुंबई के सबर्ब साइड से, सबर्ब का मतलब मलाड, बोरिवली, दहीसर, अंधेरी के बाद जितना भी कुछ आता है डाउन साइड में, अप साइड में को एक्चुअली वो सबर्ब्स है. तो जितने भी सबर्ब्स हैं, पुट योर हैंड अप. भाई थोड़ा पीछे लो. अरे भाई तुम ही आ रहा हो बीच में. तो नहीं होगा तो आना पड़ेगा ना यार. पीछे लो. इतने कम लोग. Alright, all the people who are over here from Bandra, put your hand up. आतिश थोड़ा पीछे होगा भाई. क्या बात है, all Bandroites. Every time I see Bandra, मुझे याद आता है भैया हमेशा. Very nice. Alright, let's understand. People who are from Churchgate, from Sobo, South Bombay side, put your hand up and make some noise. एक मिनट ठीक है. तो आप मेरे 3 डिवीजन समझ गए. We've got Sobo, we've got Bandra at the center, and we've got suburbs. हम लोग एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं before our next performance. I want to see कि कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा ताकत है. Let's start. I want all the Sobo guys to make some noise. South Bombay, come on! पीछे जाओ. क्या बात है, love the spirit man. All right, very nice. All the people from suburbs, make some noise. थोड़ा सा पीछे जाओ. पीछे से पीछे. All right, finally, Bandra की जितनी भी जनता है, make some noise. Clearly, Bandra का पहला काम ही हारा है, लेकिन हम सब मुंबई से हैं. Most importantly, ना सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र से, we are from India. We are Indians, and that is what defines us, our temperament, our personality. With that, let us move towards the
15 मीटर साइड में